Hello students, welcome to next lecture. In this lecture, we will discuss about exercise number 1.2 and here's the question. State whether the following statements are true and false and justify your answer. हमें statements दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो true है या नहीं. First है कि every irrational number is real number. So obviously this is a true. Why this is a true? Because we know that real number is collection of rational and irrational numbers. And irrational number is what? Which is cannot be written in the form of P by Q. So I'll written this. Okay, so I written this as it is true. An irrational number, a number is said to be irrational if it cannot be written in a P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. And what is irrational number is root 2 and root 5 and pi. And real number is the collection of both irrational and rational numbers. So every irrational number is real number, but converse is not true because real number contains rational numbers also. So converse is not true. Second one is every point on the number line of the form under root m, where m is natural number. Okay, we know that what is natural number? 1, 2, 3 up to infinity. And every point of number line. What is the number line? In which number line means real numbers on it. मतलब सारे नंबर्स क्या होंगे? रियल का मतलब रैशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए. ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, मैंने नंबर लाइन बना दी 0, 1, 2, 3 अप्स टू इंफिनिटी, -1, -2, -3 अप्स टू इंफिनिटी. तो यहाँ पे पूछा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, 1 ले लिया मैंने, तो उससे रूट m, यानी इसको m मैं मानती हूँ, m इक्वल्स टू 1 हो गया. ओके, रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ओके हम √1 लिख सकते हैं. और 1 क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है. ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. अब अगर मैं इसी नंबर लाइन पे ओके 4 भी लिख देती हूँ, यहाँ पे √4 लेती हूँ. ओके, √4 इज 2, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है. तो अभी तक तो ये ट्रू जा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414. तो ये तो डेसिमल वाला आ गया है. अब डेसिमल वाला तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया. और हमें ये भी पता है कि इस नंबर लाइन पे देखो, हमें दिख रहा है कि नेगेटिव नंबर्स भी है. अगर मैं अंडर रूट में नेगेटिव नंबर लूँगी, तो ये पहली बात तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये नेचुरल नंबर है नहीं. और अंडर रूट में लेने के बाद ये हमें क्या नंबर मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. ओके, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ natural number, so this statement is false. And now I am returning the reason. Okay, so I state this: the statement is false since per the rule a negative number cannot be expressed as square roots. Under root 9 is 3, is natural number, but under root 2 is 1.414 is not a natural number. Since we know that there are negative numbers on the number line, but when we take root of negative number, it became complex number and not a natural number. I explained it before. I hope you understand. Now next one is every real number is an irrational number. So what this mean? That every real number. So what the mean of real number? Real number means rational plus irrational numbers. Rational number and irrational number. When the statement says that the every real number is an irrational number, so
we can easily look that this statement is false because real number is a combination of collection of rational number and irrational number. So this is a false statement. Okay. Okay, so I state that the statement is false. Real number include both irrational and rational numbers. Therefore, every real number cannot be rational number. Okay, so the next question is are the square roots of all positive integers irrational? If not, given an example of the square root of number that is rational. So, what is the positive integers? We know about the integers. What is integers? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. They are integers. They are positive integer. They are negative integers. And 0 is a neutral. Okay. So the question is are the square root of all positive integers means that 1. Okay. Irrational. If not irrational. Okay. Square root means square root of 2, square root of 3, square root of 4, square root of 5. I hope you understand the question. Now, the question says, given an example of square root of number that is rational number. Okay. Under root 2 is what? 1.414. It is a irrational number. But under root 4 is 2. This is a rational number. Under root 9 is 3. It is also a rational number. So, solution is what? That no, the square roots of all positive integers are not irrational number because some of these positive numbers just like root 4 and root 9 have the square root which is rational number. Okay, so I'll written this. Okay, so I written the reason that no, the square roots of all positive integers are not irrational number. There are two examples which show that under root of 4 and under root of 9 they both are positive integers and the answer we will get is rational numbers. Okay, now next question is let's show how under root 5 can be presented on number line. So now how we can represent this? How? So basically we have to draw a touching number line. Okay, what is a root 5? ओके हमें रूट 5 एक नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं पहले एक रेक्टेंगल लेती हूँ एक स्क्वायर ले रही हूँ एक रेक्टेंगल ले रही हूँ एक रेक्टेंगल ले रही हूँ ओके जिसकी ये वाली जो साइड है वो 2 है और ये साइड है वो 1 है ओके अब मुझे ये साइड कैलकुलेट करनी है now easily we can see that this is a right angle triangle okay or we can apply here Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Okay, ABC. Pythagoras theorem is if AB square is equals to AC square plus CB square. AB square is equals to 2 square plus
1 square, 2 square is 4, 1 square is 1, it is 5 square equals to रूट 5। जब भी ये स्क्वायर रूट हटता है तो सामने अंडर रूट लग जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखती तो अगर मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो वो आती है अंडर रूट 4। तो इस तरीके से इसको हटाया जाता है। तो ए बी की वैल्यू हमें अंडर रूट 5 मिल गई, इसकी वैल्यू हमें अंडर रूट 5 मिल गई। तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0 1 2 3 4। अब हम इस रेक्टेंगल को इस नंबर लाइन पे शो करेंगे। ए सी कितना है, 2 है, यानी कि 0 से लेके 2 तक क्या है, ए सी है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 1 है, और ये क्या है, रूट 5। अब मैं जब रूट 5 को प्लॉट करूंगी तो मुझे यहाँ से एक आर्क लेना होगा। ये आर्क जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आएगा रूट 5। और हमें यही शो करना था कि नंबर लाइन पे हमें अंडर रूट 5 की पोजीशन बतानी थी। तो हमने ये बता दी है, अंडर रूट 5 की पोजीशन 2 और 3 के बीच में है। ओके, I hope you understand the question and the answer as it is. In the book, we can also see that the question will arrive that show under root 2 on the number line. So as it is, we take an rectangle in which there is 1 and 1, because if we take AC is 1 and BC is 1, then after calculation AB will be under root 2, and under root 2 is 1.4, so under root 2 will be here. Okay, now I will take the next question. The next question is the class activity. Okay, we cannot do this right now. So what is next after this? After this, okay, after this also a class activity, and okay, the exercise is complete here. I hope you understand this, and okay, I will teach you in next video about how represent under root 2 on the number line. Okay, bye, thank you. Please like the video and subscribe the channel. Bye bye.